morning students, I hope you all are doing well at your places. So today we'll be studying a very interesting writing skill, that is application writing. देखिए हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग क्यों लिखते हैं? हम एप्लीकेशन राइटिंग इसलिए लिखते हैं सो दैट हम whenever we have to do some request, we have to get sanction something from an authority, so we have to write an application. Suppose we want a leave for 2 days from our school, we want a leave for 3 days from our office or wherever we are working, so we have to submit application. देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है लेटर राइटिंग और एक होता है एप्लीकेशन राइटिंग. एप्लीकेशन राइटिंग में वी डोंट एक्सपेक्ट द रिवर्ट फ्रॉम दी मतलब टू द सेंडर वन. जैसे I am writing this letter to tell you that I am on leave for 2 days, right? So I am just requesting you कि please grant my leave, but I am not expecting कि आप मुझे उस चीज़ का रिवर्ट देंगे. यही फर्क होता है लेटर राइटिंग में. लेटर राइटिंग में ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि जो सामने वाला है वो हमें रिवर्ट करे, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू दैट आई एम इन्वाइटिंग यू फॉर माई बर्थडे पार्टी, राइट? In return I will also expect from you, okay, I'll surely come. हम लोग ऐसे रिवर्ट करते हैं आगे, right? But in case of application writing there is no revert. आपको रिवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं. So let's just begin with this application writing, and this is a very important writing skill because this writing skill not only teaches you how to write an application, but it also helps you in further writing the applications on your own. That in your ages children usually used to ask their parents to write an application on behalf of them. So after doing this, you should all make sure me that you all are going to write your application whenever you are taking leave in your future on your own. So the title of our chapter is application writing, right? We'll be studying the following applications. नीचे दी हुई की applications को हम लोग study करेंगे. Write an application to principal for leave as you have an urgent piece of वर्क एट होम. हमको अपनी प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखनी है कि हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वर्क आ गया है. देखिए प्रिंसिपल में AL आता है और एक और प्रिंसिपल होता है जिसमें LE आता है, जिसका मतलब क्या होता है? रूल्स, राइट? नाउ टू द प्रिंसिपल, वॉट एवर स्कूल आपका नाम है, दैट इज मॉडल पब्लिक स्कूल एंड इट इज लोकेटेड एट शास्त्री नगर इन मेरठ. देखिए एट शास्त्री नगर इन मेरठ. नाउ सर, राइट, टुडे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. मेरे घर में मेरे को बहुत अर्जेंट काम है. सो आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल. मैं स्कूल में आने में थोड़ा नहीं आ पाऊंगी. आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर टुडे. मुझे आज की लीव दी जाए. आई विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर मीन्स I'll be highly thankful to you if you grant my leave for today, right? Now with thanks, yours obedient, and Aman Verma, he's from standard A, that is class first A, his roll number is this and date whatever you feel like, right? और इस yours के साथ कभी भी apostrophe मत लगाइए. अगर आपने apostrophe लगाया तो ये जो अमन वर्मा जी हैं ये नॉन लिविंग कंसिडर हो जाए, right? Now second application is you have to write an application to the principal for 2 days leave as you are suffering from fever. आपको फीवर हो रहा है. अगेन यू विल बी राइटिंग योर एड्रेस, दैट इज जहाँ पे आप पहुँचाने वाले हैं, टू द प्रिंसिपल मोदी पब्लिक स्कूल एंड इट्स द प्लेस इट्स इन अलीगढ़, राइट? नाउ सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे. मुझे कल से बुखार हो रहा है एंड द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days. मुझे 2 दिन का रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दिया है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिले. एंड आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर यू, कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद दूंगा, राइट? विथ थैंक्स, अगेन योर्स ओबीडियंट. नेम को उन्होंने XXX में रखा है. क्लास इज द फर्स्ट वी एंड द रोल नंबर इज रिस्पेक्टिवली 45 एंड डेट वॉट एवर यू फील लाइक, राइट? Now moving on to the exercise. Again you have to write an application to your principal for 2 days leave as you have to go to attend the marriage party of your uncle. So this is a similar, बिल्कुल सिमिलर है आपके प्रीवियस वन से. जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखा है उसकी जगह यू जस्ट हैव टू ऐड ऑन द लाइन दैट आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑफ माय अंकल, दैट इज मैरिज पार्टी, राइट? अगेन टू द प्रिंसिपल वॉट एवर स्कूल इट इज एंड सर यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, right? So I hope you all understood this. Please go through this chapter, and this chapter is very important, and please write down an application on your own in the exercise. In this way you will be able to learn that how to write an application for yourself, and make sure that from now onwards after doing this do not ask your parents to write an application on behalf of you. So keep smiling and stay blessed. Thank you.